Yesterday in the morning we were speaking about the criticality of this particular low, which is lying just like here. See if you see this one, and exactly from where this the market panned out. The market recovered. You see here, that's the first. The first thing happened in the morning is that it went and touched that particular line. See. And it started to recover from there, and we end up closing above, not above, around 23250. Well, for me 23250 has no relevance from the time frame interval wise analysis. What matters to us is now this particular downward sloping line, which is this one. This is what matters to me, and this is now stands somewhere in the range of 23,300, approximately 23,300, 23,350. निफ्टी का सही जो टेस्ट होगा ऑन अपवर्ड साइड वो यहीं पे कहते हैं आके होगा, और यहीं पे अगर हम ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो वहीं आके एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है. विल स्विच ओवर टू दैट डेटा लिटिल लेटर. सो राइट नाउ द फर्स्ट लेवल फ्रॉम द बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू इज 23,350. और इस लेवल का एक रेफरेंस और है, मैं आपको भी दिखाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर. ऑन द डाउन साइड, इफ निफ्टी स्टार्ट्स टू गो डाउन, जो अब फिलहाल गिफ्ट निफ्टी बता भी रहे हैं क्योंकि फिर से ईरान और यूएस भीड़ पड़े हैं, उनका रोज़ का ड्रामा है. तो वो जो अब लेवल है वो कहीं ना कहीं अगर मैं डिप यहाँ से मारता है तो वी वुड बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 23,350 से 23,000 तक. और इसी लेवल पे ही जो है हमारा कहीं ना कहीं परसों एक इंटरडे लो भी बना था 23,066 के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली. तो गिव एंड टेक हेयर एंड देयर 23,050 से 23,000 तक एक लेवल है जहाँ पे कि हम फिर से एक बॉटम ढूंढने का ट्राई करेंगे अगर निफ्टी आज दिन में इंट्राडे में कोलैप्स करता है तो. This is what if it gets broken. If it gets broken, we are heading towards the next possible level of 22,900. 22,850 ये एक रेंज होता है हमेशा जिसमें हम जाके बेसिकली रुकेंगे, और वहाँ पे क्या होगा देखते हैं. बट वहाँ तक आई थिंक आज का दिन का जो एक लेवल्स हैं वो यही दोनों हैं, विच इज़ 23,050 एंड देन 22,900 फॉर द डाउन साइड. On the upside के लिए 23,300 the level that you have to watch out for. उससे भी अगर ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल इसने इसको भी जाके ब्रेक करे तो अगला लेवल पे जाके थोड़ा दूर है जो 23,600 पे है. तो टेक्निकली दीज आर लेवल विच वी आर लुकिंग आउट फॉर. Now I'll go to daily chart. In daily chart we spoke about the criticality of closing above or below 23,350. For the last 2 days, we managed to just stay afloat above this level as on Friday when RBI announced the policy. This is this particular marker. The next 2 days, nothing then we are not able to close above. We're not able to go above this level again. We recovered yesterday, but we haven't gone above 23,350 and close above that. So all in all, this is again one area of resistance that we are talking about on the closing perspective. Now if you join my thread with what I told in the hourly chart is that 23,300 and 23,350 is a level where even in the hourly chart is showing a kind of resistance. Even the option data say the same. So 23,350 is important from the perspective of intraday as well and closing basis as well. Any closure like 23,350 and above would be thing that you will always take as a very bullish scenario, and then probably Nifty can go and attempt to cross 23,600 as well. But until we don't cross the hurdle of 23,350, we will not be able to say that market is in a recovery mode. Okay, what's on the downside? On the daily chart, the next downside is 22400, which is like 900 points away. For me, until then, there is no clear level available on the daily chart. So I am clear on this. No level on the daily chart for me right now. So I'll just go with some intraday levels only, and that's it. So this is the setup on the daily chart. Then we'll go to weekly charts.
The weekly chart, which is, well, again the Friday closing, I have two parameters to look out for. Just keep this thing in the mind, in the somewhere just keep this thing in mind, because अभी तो है वीक में 2 दिन 3 दिन बचे हैं, but keep this mind the level of 23500 and 23700. So 2 to 700. So for example, if we able to drift apart to 2300, let's go by Thursday, so there's very least possibility that we are going to क्रॉस अबाउट 23500 इन जस्ट वन डे, लीस्ट पॉसिबिलिटी. तो इसलिए 23500 का मतलब से जितना दूर जाएंगे और जितना दिन बीतेंगे, हाँ प्रॉबिलिटी कि इसके नीचे क्लोज होने का ज़्यादा रहेगा. एंड इसके नीचे क्लोजर इज़ नेगेटिव. लास्ट वीक भी इसने इसके नीचे क्लोज दिया, तब से लगा देखो निफ्टी ड्रिफ्टी कितने कर रहा है. तो नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट है वो 22700 पे. तो या तो ये अगले 2-3 दिन के अंदर रिकवर करके 23500 के ऊपर क्लोजिंग देते वीकली वीकेंड पे, या ये 22 हो सकता है 22700 तक जाके ड्रिफ्ट कर जाए. तो राइट नाउ वी आर इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑन द वीकली चार्ट. नाउ समिंग एट एवरीथिंग इंक्लूडिंग माय आवरली, द डेली एंड द वीकली, वेयर डू वी स्टैंड? We stand and we know certain levels. If I am already short on the market, for me 2, 3, 350 and above where I would be exiting and making some profit, because I am been short for some time now. If I am not, if I am still want to get short, I'll do below 2300 to an extent, or I'll try to go short if Nifty tries to go above reaches to 300 for any reason. And obviously because there is also a lot of open trust hand standing on the call side on this particular strike price, तो यहाँ पे resistance आएगा. I can go attempt short, maybe with some kind of stop loss that you can think about, and see if we can just drill back down to 23,000 and below. So my risk reward becomes attractive if we go short on 23300 either, or if it basically it dips down from 23000. ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है शॉर्ट साइड में, क्योंकि अगला लेवल बहुत पास ही है, विच इज़ 22,900, देन 22,800. तो 200 पॉइंट का ही है जाके. तो आई थिंक यू कैन plan accordingly, or just keep a छोटा stop loss on the same. On the upside, if I'm able to go above 23350, I will be taking long again with some kind of little stop losses, and target is 23600, because यहाँ पे जाके एक resistance है. तो मुझको अच्छा क्लीन 250 पॉइंट्स का जाके यहाँ मिल जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज हाउ आई शुड बी ट्रेडिंग राइट नाउ इन निफ्टी इफ आई वांट टू. सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई थिंक वेल इफ यू जस्ट वांट टू शेयर वन मोर थिंग इज दैट यू सी दिस ब्रॉन्ड रेंज विच स्टार्टेड समवेयर in May, somewhere in the May last year, right? I would say that May 2 years back. This is my 2-year return. See, nothing, almost nothing. Some factor or the other, kabhi tariff, then Iran war, but we are in the bloody range with no return for long-term investors, and that frustration is now started seeping in, among the people. So this either needs this upward quickly so that people go back and get some returns and invest more, or let it crash badly so that people again come here and buy on a good valuations. This will kill returns, and it's like a time-wise correction, time-wise decay of the portfolio, because हम उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है. सो कहीं ना कहीं पे ये 2-3 हज़ार पॉइंट की रेंज में पिछले 2 साल से घूम रहा है, एंड दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग आई थिंक फॉर द इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ट्रेडर्स. ट्रेडर्स के लिए उसका काम होता है. सो या दैट्स वन मोर पॉइंट टू जस्ट ponder upon. With this, thank you very much. Have a good trading day.